Okay, students, so in this question, it is given number of units of a good that can be produced by a factory. It is directly proportional to the square of the number of workers, square root of the number of machines, and to the number of hours put in. Factory produces 200 goods when 4 people work for 8 hours each with 4 machines. When 3 people work for 12 hours each with 9 machines, how many goods will be produced? ओके तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स को यार एन मान लेते हैं. एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स को डब्ल्यू मान लिया, उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ मशीन्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ मशीन्स को यार मैंने एम मान लिया. ठीक है, नंबर ऑफ मशीन्स को एम मान लिया. सो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ मशीन्स एंड टू द नंबर ऑफ आवर्स पुट इन, नंबर ऑफ आवर्स को मैंने एच मान लिया. तो यार ये रिलेशन हमें गिवन है. आप सबको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लेना पड़ेगा. सो आई कैन से एन इज इक्वल टू के टाइम्स, के इज द कांस्टेंट, डब्ल्यू स्क्वायर रूट एम इंटू एच. अब बेसिकली ऐसे देखो यार, मैं कह सकता हूँ ना कि के की वैल्यू क्या होगी, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मैं कह सकता हूँ विल बी डब्ल्यू स्क्वायर रूट एम इंटू एच बाय एन. राइट, तो दो केसेस लेने हैं यार हमें. एक केस में बताया हुआ है नंबर ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मशीन्स, और दूसरे सिनारियो में भी हमें नंबर ऑफ गुड्स निकालने, बाकी इंफॉर्मेशन गिवन है. तो मैं सीधा डायरेक्टली कह सकता हूँ कि डब्ल्यू वन स्क्वायर, मैंने दोनों जगह कांस्टेंट को इक्वेट कर दिया, कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा. तो डब्ल्यू वन स्क्वायर पहले केस के लिए मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स को डब्ल्यू वन मान लिया, नंबर ऑफ मशीन्स को मैंने एम वन मान लिया, नंबर ऑफ आवर्स को मैंने एच वन मान लिया. ठीक है, नंबर ऑफ मशीन्स को एम वन मान लिया. सो डब्ल्यू वन स्क्वायर रूट एम वन एच वन, राइट, नंबर ऑफ यूनिट्स को एन वन मान लिया. एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू द अदर केस, दैट मींस डब्ल्यू टू का स्क्वायर रूट ऑफ एम टू into h2 divided by n2. That's it. Now just put the values, we'll get the answer. ठीक है, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं. तो फर्स्ट केस में यार हमें जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, राइट, वो हमें गिवन है 4 people, right? Number of workers are 4. So I'll get 4 का square root m1. Now number of machines in the first case is 4, so root of 4 I'll directly write 2. और आवर्स यार पहले केस में हमें 8 गिवन है, और नंबर ऑफ यूनिट्स हमें गिवन है 200. Now look at the second case. Now there are 3 people, number of workers are 3, so I'll get 3 ka square. Now number of machines are 9, so root of 9 will be 3. Number of hours is 12. I need to calculate the number of units, so I need n2 now. So let's solve it from here. काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यार? That would be 9 into 3. So I'll write 9 into 3, 27 into 12 into 200, and in the denominator you can see we'll have 4 square is 16 into 2, 32 into 8. या 32 into 8 ही रहने देते हैं अभी. Now 8 into 25 is 200. 4 into 3 is 12, 4 into 8 is 32. And now students, you can see we'll get the value of n2, which comes out to be 25 into 3 into 27. Now 25 into 3 students is 75. 75 into 27, and that comes out to be 2025. So 2025 by 8, this is what I need to calculate. 8 into 2 is 16, we'll be left with 4, 42 आ जाएगा. 8 into 5 is 40, we'll be left with 2. 25 आ गया यार. 8 into 3 is 24, we'll be left with 1, and we know that 1 by 8, right, 1 by 8 बचेगा ना. 1 by 8 is basically 0.125, so 253.125. Option A is the correct answer.